पता नहीं, टालते रहते हैं वो बात को। मम्मी महाजन, आपको क्या मतलब जस्सू और निमिषकू से? Just asking that how are they figuring this out? They're still in the process of doing it, I think. And like उनका वही है, they've chose like they probably saved it for a very rainy day. जसकत का तो है भाई, वो नहीं वापस जाने वाला। वो उसको समझ में आ गई है वो बात कि कनाडा में जिस लाइफ के लिए उसको प्रोबेबली पूरा कितने साल उसको मरवानी पड़ेगी, इंडिया में वो लाइफ उसके लिए है, एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। इट्स लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील, ही डजंट नीड टू। बस ठीक है, उसने कनाडा जाके ट्राई किया ना 5-6 साल, कुछ नहीं हुआ तब। ठीक है भाई, बिजनेस भी तो कुछ है। क्या? आई कांट हियर यू। I'm just thinking that maybe मे बी? during this conversation क्या अब ये चोरी कर रही हो क्या? with me, मुझे चोरी मत करना। since I have the opportunity to start my life without yeah, but like I don't want to limit myself. Have gone hard to get the quality of sun which I have. So ऐसे तो फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ब्रो इतना ज़्यादा पैसा मुझे दिल्ली में लगेगा, उससे बहुत कम मुझे let's say पुणे में लग सकता है, या फिर मुझे उससे कम बनारस में लग सकता है. So I already have that certain standards already met within it, so why should I go to some other city जहाँ पे expenses ज़्यादा होंगे. इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव भाई, जैसे घर है, आई नो फॉर अ फैक्ट भाई, लाइक आई एम नॉट। Actually, इट्स नॉट इवन मेहनत भाई। मैं मेहनत, अगर मैं इतनी मेहनत इधर कर लूँ, then like I can do better. I can build मेरे upon लिए what is there. saving money Fine, ठीक है, and that's fair. Fair enough. बट बॉम्बे मुश्किल है, लॉन्ग टर्म मुश्किल है मेरे लिए। I'm not particularly keen on that place. वो है भाई, मतलब प्लस लाइक भाई, वही है भाई, बहुत चीजें यहाँ पे देखने के लिए भी हैं भाई। आई कांट मतलब एक्सपेक्ट व्हाट यू कॉल इट, मम्मा पापा टू लाइक grow old without
एनी सपोर्ट बिकॉज उनको कोई नहीं है देखने के लिए, लिटरली कोई। I don't have a sibling. I don't have. Why did you why did you do this second time? तो वो है मतलब बहुत चीजें हैं अभी देखने के लिए, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, ये सब होगा। I don't want to like deprive of making I've seen भाई दादू वादू कैसे स्ट्रगल करते हैं। अगर मेरे पापा वगैरह की ऐसी हालत होगी कि अकेले कैसे करेंगे वो, कौन देखेगा उनको। मम्मा हो गई, कौन देखेगा उनको, उनकी तो सोशल लाइफ ही नहीं। जानी उनकी बसी रहती है नाना नानी के अंदर, आरना के अंदर, मेरे अंदर, पापा के अंदर। वेरी स्मॉल सर्कल शी हैज। हैव लुक एट दीस थिंग्स आल्सो ना। एंड लाइक जो आप कह रहे हो उसमें भी कुछ गलत नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन व्हाट यू आर सेइंग, इट्स वेरी वैलिड। And I'm not like asking anything of you like right now, no? I'm not in. Evidence. आगे देखेंगे यार, क्या पता भाई, लाइक वी डोंट नो वेयर आवर करियर माइट टेक अस। क्या पता भाई मेरे को कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसको मैं ना ना बोलता हूँ। हो सकता है तेरे को ऐसा कुछ मिल जाए। वी डोंट नो वेयर लाइफ टेक्स अस, एंड it's a little premature to have these conversations right now when we don't even have clarity of like, you know, how long like our current employment situations might last, you know। अभी तो चालू ही किया हमने काम करना, you know, too early to have these conversations। बस बात वो है। बाकी जो आप कह रहे हो लाइक completely valid, nothing, I have nothing to no apprehensions against it, no complaints against it, very valid points to make। Let's take the अगर मुझे लगता है भाई मेरे को कुछ लाइक हो सकता है उधर में रहा था, ठीक है, मैं वो सैक्रिफाइस करने की कोशिश करूंगा अगर वायबल हुआ। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ अपग्रेड है, वो देखेंगे हम। बट देखेंगे ना बाबू, अभी तो ये चीजों के लिए बहुत जल्दी है। आप क्या कहते हो? कुछ और है मन में तो बात करो, ना नहीं बोलूंगा मैं किसी चीज को, है ना शांत? बेबी तो आप मेरे ही हो, कि जा थोड़ी ना एक दूसरे से। आपको आपको क्या डाउटीज हो रहे मेरे ऊपर? व्हाट यू? मेरे पे डाउटीज हो रहे हैं क्या आपको? अगर हो रहे हैं कुछ तो बात करी कर सकते हो, मैं जैसे मनी नहीं करी करूंगा मैं आपको। आप बेबी हो ना मेरे, पार्टनर जो हो आप, आपका भी हक है उसमें जितना बोल करने का मेरा है।
बट मुंबई में नहीं रहना यार मेरे को, अनलेस भाई देर लाइक पता नहीं putting me in a fucking prison of gold. I don't want to go there. Fuck this bitch, bhai. Fuck all their mothers. शीनू सैड मत हो अभी यार, ऐसे शादी क्यों हो रहे हो आप? क्या चोरी करने का सोच हो क्या मुझे आप? वो क्या सोचो कैसे? थिंकिंग ये चीज कैसे फिगर आउट होगी, मतलब मैं दिल्ली में रहने में मेरे को दिक्कत नहीं है, बट मैं वो बात कर अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना चीजें. Why are you thinking of like factors that are out of your control right now? Let's say भाई you do well over here and like तू consulting firm में interview करती है and वो तेरे को like let's say it's like an MBB firm. Let's say भाई मैं हो गया भाई JP Morgan की कोई बहुत क्रिएटिव चीज मेरे को पाऊँ ऐसे देख ऐसे फालतू में ना नहीं बोलूंगा ना मैं. There's like so much going on. एंड लाइक अभी तो मतलब मैं तो नौकरी भाई मेरे को लाइक बिफोर इवन स्विचिंग जॉब एटलीस्ट आई हैव टू जॉइन वर्क राइट. एंड लाइक द थिंग इज कि एक और चीज ये भी है ना कि लाइक जैसे आप तो एक्टिवली ढूंढ रहे हो कि एक स्विच मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए. मैं तो अभी थोड़े टाइम के लिए मैं वो कर ही नहीं रहा. मैं तो है ना बेबू मतलब एक्टिवली बट लाइक एटलीस्ट इट्स गोइंग ऑन इन योर इट्स गोइंग ऑन योर हेड एक्टिवली राइट. कि like those thoughts are in your head active कि like you are fairly on the lookout for something better if that may arise. The thing is like you're like not 100% satisfied with what you have. अरे शांत अपनी बात इंटरप्ट नहीं कर सकते. वो चीज है भाई. रियलिटी ऑफ द सिचुएशन भी तो है कुछ. देखते हैं व्हाट डज दैट से. समझ रहे हो आप पॉइंट? वरना आपके हाउसेस को कोई मना नहीं कर रहा, आपका हाउसेस ले लूंगा मैं. और आप मेरे से मिली करने आओगे तो मैं आपको घूमी भी कराऊंगा ना यहाँ पे. फिर नहीं करनी तो बता दो. पमी पमी उसी शिशु करने आपको तो बता सकते हो, पर वही करते रहूंगा मैं आपको. शीनू मुझे किसी इसने दिया आज आपने. because आपने तो इसलिए नहीं किया.
सिर्फ 2 क्यों दे रहे हो? लवीज पे काउंट नहीं होता है। फिर मैं भी सिर्फ 2 दूंगा आपसे आपका आपको। किसी सप्लाई अभी 2 है। हमें एक सिटी में तो होने दो बॉन्ड। क्या वो है वो जॉब? मुझे तो लगा था एक सेकंड के लिए मैं I mean, yeah. To be fair, his music was kind of revolutionary for the time. Saves and everything. हाँ, प्लस वो दिखने में भी अच्छा था। Bum, bum, Anya ki bummy, Shan, Pachanya, Shanti Pachan, Shanti Panti Shan, Panti। मैं आपको बमी मसाज दे दूंगा। ये बात भी है। अब बमी महाजन हो जाओ पहले। आप तो शमी का इश्यू दे देगा आपको मसाजीज। कौन? इश्यू क्यों? छू के हट जाती है, वो बिजनेस है। पर आपको उससे फर्क पड़ जाता है ना आपको। Yes. अब मेरा कहाँ पे फर्क पड़ता है आपको? फिर मुझे क्यों बुरी कर लिया? मैं बीबी हूँ आपका। Fucking friend. Oh my god. क्या सुन रहा हूँ? ये क्या गंदी चीजें सोची जाती है। शांत शांत मेरी शांत। No, but seriously though, damn fucking Jenny. Oh my god. What is this weird ass things on here? Come spend a day with me in my office. न्यो बिंदु ऑफिस है आपका।
if you ask me, bro, तूने देखा ना टाइम पे क्या हाँ, need to. That's honestly quite sad. होना ही था जिसको But what is there to discuss? I know, right? And नील को मैंने भेज दिया तो तो भेजा तो लिख रहा है welcome to corporate life. Slowly you will learn not to give a shit about this. What's the worst case that can happen? Just hire you. That's panic. Stress काफी था सही बात है. Who was PC? Wasn't that like a one-time thing? SPC तो एक ही बारी चीखते थे. हाँ, that's like I think we've had this conversation once. Yes, Bamiani. अब शमी सुनेंद्र मुझे ये बताया किसी ने आपको कभी? अब वरीज क्यों कर रही हो बेबी? आपके पास मैं हूं ना. क्या बात करेगा शायद मेरे से. And you have your points clear, na? Have everything clear with you. तो मैं तो आपको कुछ भी बोलेगा मैं बस सुन लूंगी और मैं सॉरी बोल दूंगी वरना फिर उसे लगेगा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. You'll be fine, baby. अब शाम भी 5 की हो जाओगे, कुछ नहीं होता.
शाम भी मुझे किसी दे दे। मुझे लवीज नहीं मिले आज, बिल्कुल भी नहीं मिले आज। आप कितने बजे? तो सिमरन वगैरह की स्टोरी क्यों पोस्ट करते थे, याद आती है उनकी? ये अभी हम भी नहीं थे। फ्रॉम होर्स। वो तो है। यस शान। शान मोगू बहुत मारी कर रहा है मुझे। आप जीत जाओगे वो कर। आप मेरे को मुझे कंफर्टिंग्स कर रहे हो आज। मुझे ना आज बहुत अच्छा अच्छा बैड डे था बहुत। मुझे कंफर्टिंग्स चाहिए आज। मेरा भी बैड डे है। अच्छा अच्छा, फिर मैं कंफर्टिंग्स करूंगा आज, मेरी बारी आज। बताओ क्यों है बैड डे आपका? किसी कल आपने लिख किया था, आपने बोला वाह मुझे भी फिर लुबॉन बहुत अच्छी लगोगे आप। किसी के साथ आपको टाइम अच्छा, आपको शाइसन चाहिए? ऑन्टिसन। You don't have to give me that, it's fine. अम्मा मुझे क्यों नहीं कुछ, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं करने देते हो कभी। Because I realize it's a lot of money. You don't have to buy it, it's fine. नहीं मैं दिलाऊंगा इवेंचुअली। और मेरे को ट्रस्टीज कोई नहीं करता, सब मेरी गंदी शान समझते हैं। मेरी बेस्ट शान है। मैं अच्छा बेबी हूँ। शिन्यू अब मेरे से satisfied हो एज अ बॉयफ्रेंड ड्यू? क्या बोलूँगा? एक सेकंड। एक सेकंड में बीच में हूँ बबू, पॉज नहीं होती के। हाँ, बताना नहीं देखना। क्या करना है? Comments देखो वीडियो के। जीरू पान सो के सो ही कॉल्ड मी फैन। उसने फैंस नहीं बोला। इतना रूड हो जाओ उससे। रूड की बातें कर रही हो, अच्छी बात नहीं है। क्यों? ऐसे तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको बुरा लग रहा है?
उसने चार्जेस किया कोई चार्जेस नहीं है ये ट्राई यूज नहीं होता है ऐसी अ मैन शुड बी एबल ब्रो इमरजेंसी की सिचुएशन में व्हाट इज अ मैन गोना डू let's say the woman is pregnant and she needs help and if no one else has food No, but should you be lifting a pregnant woman is what my question is. Is it like safe to do that? yeah one is not Is it safe to do what that? the heck किसी इमरजेंसी में of course you will let's say you have to bring her in the car bro it's not so empty when back I mean, okay, you make a fair point. हाँ बिल्कुल नहीं अभी नहीं गया मैं I played the PS I wanted to spend my money doing that I mean and I don't think it was unwarranted honestly खुद मन करता था नहीं मन करता था जाने का घर के बाहर ही निकलने का मन करता था मेरा तो आंटी आप मुझे से गुस्सू क्यों हो जाते हैं अपने से गुस्सा नहीं हो रहा तो वांटेड होती है मैं अच्छा बेबी बॉय आज मैंने 1 बीयर किया बस आप अब आप के ड्रामो नहीं देख रहे आजकल नहीं काफी काम है मुझे अच्छा And like I don't enjoy going to the gym guys नहीं अच्छा लगता the people who romanticize भाई वेट ट्रेनिंग इस वही उसी में तो नहीं अच्छा लगता क्या एक एस्पेक्ट है No, I don't mean from women's perspective. I mean like
वो लोग होते हैं ना जो पूरा एक बहुत वो करते हैं मतलब। I get it. Like, I mean, there are like, matlab, it is like a net positive only. But it's like, I don't like it. It's boring. बम्प्रस में बहुत चीजें लगती हैं मेरे को भाई, लाइक फॉर्म है नहीं है, ये देखो ये ठीक से कर रहे हो, खाना ढंग से खाओ. You have to make a lot of lifestyle adjustments also for it. And on top of that, it just like, matlab, it hurts while doing it. भाई पूरी बॉडी दर्द कर जाती है. पता नहीं. What is this second piss? Why does this like, why is it starts ejaculating piss all over me? वो है भाई, मतलब मेंटल ब्लॉक है भाई बहुत बड़ा मेरा जिम के टुवर्ड्स. 2-3 महीने आई ट्राइड इट, आई डेंट लाइक इट एट ऑल. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेरे को, होता ही नहीं था मेरे से अच्छे से. गांड मर जाती थी. स्ट्रगल थ्रू इट सो मच. आई डेंट लाइक एनी ऑफ इट. एक दिन अच्छा नहीं लगा जाना. आई थॉट बड़े मन से ज्वाइन किया था. डेंट लाइक एनी ऑफ इट. डाइट वाइट का भी था, इतना ये खाओ इतना वो खाओ, नहीं खाया जाता भाई इतना. और खाया जाता तो कबाड़ खाया जाता है. इट्स लाइक आई डोंट हैव द यू नो. ऑल्दो मतलब इट्स प्रॉब्लम लाइक इसका लाइक लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत सारे होते हैं. बट पता नहीं, मे बी नहीं ऐसा नहीं. कौन उठाएगा आपको मेरे अलावा? बट
turn off. हम आपको वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।
That's pretty good. I mean, it's alright, like. I mean, it's alright, like. इससे सब आगे बढ़ेंगे आप अकेले होते हैं अकेले होने के साथ थोड़ा सा बेचैन हो परेशान और फिर चिंता में आपको बहुत ज़्यादा It is one of the most horrific locations that software has ever created in this region of the land between. The color green disappears from the environment, replaced by a sickly rotten red. The grass and trees have all withered away. The animals have either vanished or been mutated into hideous and monstrous new forms. The soil has turned a nauseous pink. The sky is
There's so many swamps. As well. Demons, Souls, Dark Souls, even Armored Core 6. But I think that Elden Ring, even more than Bloodborne, may truly be their cosmic horror masterpiece. But let's get back to Caitlin so I can explain what I mean. Okay, so what is it about this setting that makes it more than just another From It's a swamp. It's for blood that occurs in swamps. There are only 12,000 it's reminds me of one of ancient was the father of in his stories, his characters were not typical monsters, but instead ancient stories, which was such an incredible power. It's the humans it's a very different kind of film than anyone before. A forbidden place which all was avoiding and refused to even speak about. He eventually learns that it used to just be a normal farm until about 50 years prior when a meteorite struck the property. The meteorite glows with a strange color or presence, a phenomenon so foreign to human senses that it cannot be accurately described. Further and further away from the influence of changing more and more affected by the meteorites and insane and finally spreading across the farm, animals in biology, it is a poison. Survivors fire against
Purged from her flesh, not even with the power of a god in her hands. Way back in Elden Ring's original story trailer, we were shown a battle, an epic confrontation between two demigods, the climax of one of the most violent and most calamitous campaigns of the last Great War. The so these two demigods history relates between Frostbite and devastating. This place spreading deadly mutagenic radiation across this entire region. Something that came not from outer space, but from inside her own body.
Face. It's as if her body is literally falling apart piece by piece. Except, just like Kaylin, her body is not really rotting at all. It is being rewritten by an alien biology. Midway through our confrontation with her, where it appears that she might be defeated, this transformation finally completes. And it does not leave her rotten and sickly and weak. Instead, she emerges like a The spreading rot inside her body prevents her from ever being anything more than a ticking time bomb, a foul influence on everything and everyone around her, continuously spreading that new alien biology, even if it is against her will. Despite all of his power, Nicola cannot stop from the relic of a single god. A description for the map of the Lift of Rock mentions this god too. It reads, "It is said that the divine essence of an outer god is sealed away in this land." We actually do have some idea of who was the one who sealed that outer god away, because the description of the answer chart states, "Answer represents
that they are Instead, according to the prosthesis wearer heirloom, he trained Melania in a flowing sword art that would allow her to resist the rods of Van. Vance. In the biblical story of creation, God creates man in his own image. This is cosmic horror and its God is not the God in the story falls seems as if ancient ruins and tombs and caverns to explore. Everything you would expect to find in a standard medieval fantasy setting. The fundamental rules of how the world works seems very ordinary at first too. This setting is being fought over by a pantheon of powerful gods and demigods who are all basically human in both appearance and motivation, even though their power allows them
these things naturally. It's just wicked. That's so big. It's spine. It also attacks with magic that is both beautiful and incredibly powerful. I mean, just look at these attacks. They are gorgeous. It really looks like the power of a genuine god, full of radiance and splendor and shining light. It is some of the best work the animators over at From Software have ever done. It describes the Elden Ring Instead, it is even a prospect born of the stars or of another dimension or of who knows what. And if it's anything like this Elden Beast, its true form must be something genuinely bizarre. The Greater Will is confirmed to live somewhere beyond our planet. The description of the Elden Star's incantation reads, "It is said that long ago, the Greater Will sent they are found. Champions, it has radically changed the way the laws of nature function here, changed the nature of the divine itself. And I think this process is, in some ways, very similar to the way the rock god transforms the environment in his own image. The Greater Will is doing basically the same thing, just with different methods. Let's look at that previous description again. The element is Is mine and somehow and life given physical form in the same way that the rot god naturally spreads rot and decay to everything it touches. I think the Greater Will naturally spreads order and structure to everything it touches. This revealed that the Greater Will is actually some crazy cosmic god recontextualizes our entire understanding of space. Insects to be swatted aside so that stellar movements beyond our comprehension can reach their zeniths. And it's not just the Greater Will of the rock god, there's also
represent either the divine essence or of any of a dozen different fell gods, each of which are alien and strange and dangerous, each of whom are so powerful that we are little more than insects in their presence. And yet, as strange as it is to say, that's really not as different from our own world as we might first think. About cosmic influence makes me this culture. We are trapped in a world that is completely incomprehensible. And yet there are also these rays of hope, these ways in which we can defy fate and take control of our destinies learned from the fell gods who would underestimate our human potential and make the mistake of treating us as mere tools in their own foul schemes. In the end, small though we may be, we are the ones who will decide the destiny of the landscape. It's about the serious video.
mine and mine Mind alone. is portrayed as the only searching for and finding the truth to itself. In fact, if the cosmic horror of this idea thrown its head. In cosmic horror stories, truth can be dangerous. Some knowledge is forbidden for good reason. In the search for the truth, we will inevitably find things we did not want to know, which upset our understanding of reality, of the nature of existence, and of our place in the world. We find this idea of sometimes prophets visions of this big promises they are received. Seeds of hate and power destructive spread and create Is mine and mine alone. Flesh, gifting it incredible strength and endangering the entire world. The shattering wars, epic and terrible battles transformed the once bountiful lands between into a post-apocalyptic wasteland may have also been the result of a misguided search for the truth. America, we are blind beliefs are wrong.
as in Elden Ring, particularly surrounding the Chaos Flame. Those who have been seduced by the Chaos Flame go insane. Their minds cannot handle the truth that the three fingers offer. Mo, the Lord of Blood, is also often described as mad by It is a common trope for heroes in stories to repeat some version of the phrase, "You may have enslaved my body, but my heart and my mind will always be free," which speaks to this idea that no one can control our ideas. Whatever happens to our physical bodies, our thoughts will remain. What if thoughts and feelings? That's very like people have, gets you down on the up. Feelings. The upcoming DLC, The Shadow of the Erd Tree, is going to focus on Mikola, son of Marika and brother of Melania. It has been suggested that Mikola has the power to control the hearts and minds of those around him. And if that turns out to be true, it will reveal that he is the most hidden god. It's terrifying because he is the one himself. Some cosmic horror can be found in an absolute screenplay and character of Elden Ring. From its feelings from the world to the glorious shine. Beyond visuals and that eldritch nightmare it's that these stories can tell us things about lives in surprising ways, discuss what is really important and why, provide a space to explore uncomfortable feelings and ideas that are difficult to discuss otherwise. And my hope is, with this video, I have been able to show you that at least a little bit. I absolutely adore the world that From Software brings and the stories they tell. I plan to make a whole series of video essays on so this game from players' perspective, and I, whatever characters the DLC as well.
The Blasphemous Blade is easily one of the most powerful weapons in Elden Ring, with insane damage, built-in healing, and one of the best weapon skills in the entire game. It easily melts bosses in PvE. So in this video, I'll show you the best gear, setup, and stats needed to make the Blasphemous Blade overpowered. Start with the tools and then use the Aged One's Exaltation to raise power by 20% with each magnet. Then the Talisman to raise magnet attacks by 15%. Use the Blood-Sucking Craft tier to raise attack power by 20%. And the sharp last 10-15 years में there's no show off, there's no show shot, none of that. महंगी गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी आपको ऐसे. Of course YouTube पे आप जाके देख सकते हैं collections. They are playing with a different level of money. उनके शौक पूरे हो चुके हैं. वो अमेरिका को फोन करते हैं कि यार आपको जो बेस्ट जेट है उसकी फाइनेंसिंग हम करेंगे इस हॉबीज में जाएंगे. और यार ये आइट टेक के 5,000 आदमी बता रहे हैं उन्होंने बस. So sadly is आप easily see I know for a fact कि अगर मैं इंटरनेट पर डालूंगा ना जिसकी कैपेसिटी में मैं चाहता हूँ कि हम और वाइल्ड बनाएं. अब the second season cannot be a diluted season. You have to only double down. That's how comedy works. You have to make it even more wild. But वो इंटरनेट पर डाल देंगे तो there are real world repercussions. I don't want मेरी family sad हो, मेरी family मेरी मार हो रही थी भाई वो पूरे टाइम. I can't put her through that because I have a point of view. इंटरनेट पे I don't want to play that game of the wildest show. It can like not without but I care about how I am feeling. I plan और मैं कॉल करता हूँ मैं आज मेरे को करना है भाई तो मैं बन जाए कि समझ में कि मेरे के यहाँ पे था डिसेबिलिटी भी थे मिट्टी को भी लड़की को भी थे how I want to have I have something for the matter I'm seeing cannot be diluted I don't want to play while the show it can like not go I care about how I'm feeling. I plan I think it's sometimes we चार के साथ disability with the I can't how showing complete but I want to have something one of my one to come and see life. I know for a fact that I might get to down for a capacity I चाहता हूँ और फाइट करें. Second, cannot be
level down as well. But like I said, I've never, I don't want any family plan. I don't want to play that game of being the wildest show, and where we can like make these things like I look at people, I care how everything is life. India is very very scientific. अब मैं एक एग्जांपल दूं तो अचार डर नहीं है. Before we start, actually, for 0.01% people know who you are and they're watching you for the first time, they have no clue. What would you tell them about yourself in next 30 seconds? What would you guide them? For 0.01% people, perspective. You tell them about yourself in next 30 seconds. What would you guide them? So like काजल दीदी का फोन है like पूरा काजल Is mine and mine alone. Genealogists sold fake royal bloodlines to dozens of wealthy clans for $50,000 each. She targeted newly rich people desperate for class, created elaborate family trees, connecting them to European royalty, American founding fathers, famous artists. She forged documents, bribed clerks to plant fake birth certificates, even manipulated DNA results. Her clients bragged at fancy parties about their royal heritage, until her viral couple and checking out. He was supposed to be their royal cousin. Instead, he blurted out the whole thing was fake. That's when it got messy. Turns out she'd been selling the same fictional prince bloodline to dozens of different clients. They all thought they were special. They all thought they were the only ones. But at the International Genealogy Conference, where she was giving the keynote speech about revolutionary heritage research, victims showed up, like real genealogists, with real historians, real evidence. She built an empire in people's desperation for status, made sure they got their money's worth of endorsement instead. Did you know a genealogist sold fake royal bloodlines to dozens of wealthy clients for $50,000 each? She targeted newly rich people desperate for class, created elaborate family trees, connecting them to Europeans. How is it possible कि ये टीम इतना गंदा परफॉर्म कर रही है? How is it possible कि रहाने से कैप्टन इतना गंदा परफॉर्म कर रहे हैं? मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट अभिषेक नायर समवन फ्रॉम द मैनेजमेंट उनसे ये स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी अभी तक कि भाई हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड सो अभी तक जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे वो लोग बेंच होंगे एंड जो लोग अभी बेंच पे नहीं फॉर द चांस पे अभिषेक को बेंच पे फाइव मिनट एंड वी डोंट नीड द मैच एवर दैट बैट हैव दिस फादर टाइम के पास है नहीं पर बेसिकली मतलब आई कैन टेल यू on paper indicators करती है. How is it possible कि ये टीम इतना गंदा परफॉर्म कर रही है? How is it possible कि रहाने से कैप्टन इतना गंदा परफॉर्म कर रहे हैं? मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट अभिषेक नायर समवन सीएस के आ जानी चाहिए थी कि भाई हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड सो अभी तक जो लोग नहीं कर रहे ठीक है बेंच होंगे बेंच पे नहीं फॉर द चांस पे अभिषेक प्लेयर को बेंच पे भाई पहले एवर दैट मैच अब इसके फादर को लेकर टाइम के पास है but basically I can tell you on paper indicators करती है. How is it possible कि ये टीम इतना गंदा परफॉर्म कर रही है? How is it possible कि रहाने से कैप्टन इतना गंदा परफॉर्म कर रहे हैं? मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट अभिषेक नायर समवन फ्रॉम द मैनेजमेंट से ये स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी कि भाई हम नेक्स्ट सीजन में प्रिपेयर करें सो अपने अभिषेक को मैच को पहले लेकिन बात कैसे चलाएं?
classic है, but इससे नहीं ज्यादा है। जो भिखारी यार नहीं बैठा था हैं? इसी सही से दिया is mine and mine alone.